Okay, so good evening, everyone. I hope all of you are doing good and in a great condition. So, we have started this chapter, Laws of Motion, in our previous class, and I hope the basics of it that we have covered in the previous class is pretty much clear to all of you, isn't it? If anyone has any kind of doubt regarding the previous lecture, you can ask me in the chat box. You can unmute yourself and then ask. Now, I would like to continue from where we have left off, and that is specifically momentum we are discussing, isn't it? So, momentum we have started. Momentum we have also understood that कि कोई भी फोर्स का अमाउंट हमें मेजर करने के लिए टू मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स वी नीड द मास and we need the velocity change. Got it? And that is why the Newton's second law specifically written as m dv by dt plus v dm upon dt. Now, but for most of the cases, we assume that mass is constant. So for that, this term will become zero. And finally, we get into this conclusion, F is equals to m into acceleration. Got it? And this F should be the external force. Now, which force is need to be external? किस force को आप external बोलोगे? So I'm giving you a situation. Suppose मेरे पास एक block है, ठीक है? मैंने इधर से भी force लगाया हुआ है और इधर से भी force लगाया हुआ है, F1 and F2. If these forces are equal, F1 is equals to F2, will there be any motion happen with this block? क्या ये block move करेगा either in this direction or this direction? Is it there any possibility? I guess you will say no, because on both sides the forces are balancing each other. Got it? So if I talk about the net force, that is zero, and that zero, this net force is actually the force external, which means unbalanced force cause the motion. Unbalanced force is cause of motion. ठीक है? Got it? Suppose we have a system over which multiple forces are acting in multiple directions. This is F1, F2, F3, F4, F5, F6. What is the net force in the system, if I might ask you? So F net is nothing but the vector sum of all the forces acting on that system. ठीक है? क्लियर हुई बात? किसी को कोई डाउट है इसमें? Any kind of doubt, guys? चलो. Now, this what we have done in the previous class. Now, the second statement here written as momentum is also equivalent to the force required to bring the object to a stop in a unit length of time, which means we can say F is equals to m dv by dt, or we can say dp by dt. So if this time period is 1 second or unit length, 1 second, 1 hour, or whatever it is, so we can say that force is nothing but dp, which is the change of momentum. So whatever the change of momentum happen in 1 second or unit time, that is also be equivalent to the force required, ठीक है, और force applied. इतनी बातें सभी को क्लियर है? Yes and no, everyone? ठीक है, चलो. In the next slide, I have discussed you about conservation of linear moment. Okay.
इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आई हैव गिवन यू द मैथमेटिक्स ऑफ इट. अगर किसी भी सिस्टम पर इफ द सिस्टम हैविंग zero net force or F external on the system is zero. So if F external is zero, then we can say that delta P or dP will be zero. And this will ultimately lead you to this conclusion that P will be a constant quantity, which means the momentum of the system remain conserved as long as the net force on the system or external force on the system is zero. ठीक है? I think it's pretty much clear to all of you. अब देखो, मैंने आपको बोला था कि I'll discuss the practical example in today's class. So the very first example that I would like to take here is recoil of gun. Recoil of gun. Suppose अब आपके पास एक गन है, ठीक है? इस गन को जब मैं शॉट करता हूँ, बुलेट को मैं शॉट करता हूँ, तो ये जो बुलेट है, दिस विल एक्वायरिंग सम वेलोसिटी, एंड जो बुलेट है वो एक स्पीड से बाहर निकलती है, ठीक है? एंड हमारा जो गन है वो भी पीछे की तरफ पुश करता है, एंड दैट जर्क वी फील और ऑन द शोल्डर्स. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन. नाउ व्हाई इट इज हैपनिंग? इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. व्हाई? इफ यू से बिफोर फायरिंग बिफोर फायरिंग क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं, कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है गन के अंदर, which means before firing also the external force on the system is zero, and after firing also there is no force. So if the external force on the system is zero, we can say the momentum of this system is conserved, and the system comprises of bullet and gun. तो सिस्टम में हमारे कौन है? बुलेट और गन, और दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव ही नहीं. इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिव, देन वी कैन से कंजर्वेशन बिफोर firing and conservation after firing will be equal because momentum is conserved. तो इनिशियली इफ आई से कि जो मास ऑफ गन है, मास ऑफ गन इज कैपिटल एम, एंड मास ऑफ बुलेट जो है, मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल एम, ठीक है? सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ गन इज लेट्स से vg, and velocity of bullet is vb. Now, if I apply the conservation principle here, that P initial should be equals to P final. Initially, both are in rest because bullet is in the shuttler here and gun is also in the rest. Okay. So we can say both having zero momentum. But finally, if you will see, the bullet is moving with a velocity of Vb in the forward direction, and gun is moving with a velocity of Vg in the opposite direction. Okay. So we can say that P final would be capital M, which is the mass of gun and velocity of gun, plus small m into velocity of bullet. अब यहां से आप अगर देखो तो ये 0 is equals to mvg प्लस स्मॉल एम वी, ठीक है? तो मुझे क्या निकालना था? वेलोसिटी ऑफ गन. तो इट विल बिकम स्मॉल एम वी बी अपॉन कैपिटल एम वी जी. तो वी जी विल बिकम माइनस एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी बी. It's very clear from this statement that velocity of the gun
Due to this negative sign, it indicates that velocity of gun will be opposite of the velocity of bullet, which means if bullet is moving forward, the gun will move backward. But here, if you will see that small m by capital M, this is the specific ratio here, small m by capital M. Now, capital M is very, very large in comparison to the mass of bullet. Mass of gun is very heavy. So this ratio is very, very less than 1. Got it? If this ratio is very, very less than 1, then we can say that velocity of gun is very, very less than velocity of bullet. ठीक है, इसलिए बुलेट तो बहुत तेजी से आगे की तरफ जाती है, लाइक 4000 मीटर पर सेकेंड और 5000 मीटर पर सेकेंड, बट द वेलोसिटी ऑफ गन इज वेरी वेरी लेस, इसलिए वो हमें एक स्मॉल जर्क दे करके छोटा सा हमें एक जर्क महसूस होता है ऑन आवर शोल्डर. इट्स बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. What it? So this is the example of conservation of momentum. I'll write here. Conservation of momentum. Got it? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर आप आइस स्केटिंग करते हैं and you are on the ice skate, and if you throw some mass away from you, then you will also feel a force in the opposite direction and you will be also moving in the opposite direction. It's because to maintain the P final is equals to P initial. Got it? सो आई थिंक कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा इन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, यहीं पे मैं बता देता हूँ. रोल ऑफ इंटरनल फोर्सेस. और चलो नेक्स्ट पेज पे ही मैं बताता हूँ. सिस्टम. देखो बहुत बार हम इस टर्म के बारे में बात करते हैं, सिस्टम. बट व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम इज दैट थिंग विच वी कंसिडर टू ऑब्जर्व. तो जिस भी पार्टिकल को, जिस भी डिवाइस को, या कोई ब्लॉक है, जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, द थिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग, द थिंग दैट वी आर स्टडिंग, that is comprises of system. It is pretty much similar to the system that we define in thermodynamics. What it? Or we can say the area of study. The field of study we also can say. Or observation. ठीक है, अब देखो मास और बुलेट मास एंड गन मास को मैंने कैसे सिस्टम में कंसिडर किया. ये मेरा बुलेट सॉरी गन है, एंड दिस इज द बुलेट. अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं. दिस इज अ बुलेट एंड दिस इज द गन, बट मुझे दोनों को एक साथ स्टडी करना था. दैट इज वाई अब कंप्राइजेज द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ दिस गन एंड बुलेट. इसीलिए जब फायरिंग होती है, व्हेनेवर द फायरिंग अकर, वहां पर जो इंटरनल ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ये जो बुलेट है ये मोमेंटम गेन करती है ड्यू टू द बर्निंग आउट ऑफ दिस बर्निंग मटेरियल्स इनसाइड इट, वो जो ब्लास्ट होता है दैट वुड अकर इंटरनली. इंटरनली, and that will be not counted as a external force. ठीक है ना, क्लियर हुआ? इसीलिए whenever we decide the system, so whatever the internal forces acting inside the system, we will not consider them to observe it or to apply the phenomena of conservation of linear momentum. ठीक है, जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है,
दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। अब अगर मैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को सेपरेटली स्टडी करूं, ब्लॉक ए को अलग से ऑब्जर्व करूं, ब्लॉक बी को अलग से ऑब्जर्व करूं, सो दैट इज सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। बट इफ आई कंसिस्ट कि मेरा जो सिस्टम है दैट विल बी कंप्राइजेज ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, नाउ दिस विल बी द कंप्लीट सिस्टम बी प्लस ए। अब यहाँ जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होगा ड्यू टू बी एंड ए का कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट पे, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ इस कॉन्टेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे आई वुड नॉट कंसिडर देम। गॉट इट? बिकॉज मेरा सिस्टम क्या है, बी प्लस ए है, तो इसलिए ये जो फोर्सेस हैं जो इंटरनली एक्ट कर रहे हैं दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है? So if I given this situation to you, you will say that F external on the system is 0. In spite of these forces, these frictional forces are acting, but these are the internal forces. Got it? So this is the concept of system and internal forces. Now, how to draw a free body diagram? That will be the heart of this Newton laws of motion. If you know how to draw the FBD, at least 70% of the question is solved. Then you just have to write the equation and solve them properly. ठीक है? Now FBD is termed as the free body diagram of any system. It is termed as free body diagram. Free body diagram में we just show the external forces that is acting on the system. अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. There is a block resting on a surface having mass m. अब यहाँ मुझे बोल दिया गया कि ड्रॉ दी एफबीडी फॉर दिस ब्लॉक. तो कैसे करेंगे? हमेशा सबसे पहला पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है, ड्रॉ ऑल द कॉन्टेक्ट फोर्सेस. ड्रॉ ऑल कॉन्टेक्ट फोर्सेस. कॉन्टेक्ट फोर्सेस. ठीक है भाई, कॉन्टेक्ट फोर्सेस तो ड्रॉ करने हैं, बट इन विच डायरेक्शन? परपेंडिकुलर. दिस इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट. तो जो भी कॉन्टेक्ट में जो सरफेसेस हैं उन सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द normal reaction. Normal reaction. In the very first lecture I have told you about this force, and I have also told you at that time ki I'll discuss it in the how to draw the free body diagram in that segment. So that contact force will be drawn perpendicular to the surface. अब देखो, surface of contact तो यही है, तो इस surface के perpendicular force जो लगेगा that is normal reaction. Got it? Now the second force is gravitational force or the weight force, we can say. Weight of the system. Weight of system. Always remember, weight of system acts always in downward direction. Downward direction. No matter it is placed on the inclined surface or a rough surface or whatever the surface is, whatever the inclination is, weight of the system will always act downward. So in this case, it will be like this: mass into gravitational force. Let me discuss some few example. So first example is this. This is the block and this is the surface. अब हमेशा ये बात याद रखना, by Newton third law, if the normal reaction, this normal reaction is provided by this surface, let's say surface 1. So in opposite to that,
this block will also try to push this surface in the downward direction. So if you draw the FBD for this block, normal reaction would come up and mass will come down. But FBD on this surface will be in the downward direction, it will experience a force. This normal reaction is applied by the surface in the contact. ठीक है, क्लियर है? अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आएंगी, जब दो या दो से ज्यादा सिस्टम इन कांटेक्ट हो. सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज द ब्लॉक 1 एंड दिस इज ब्लॉक 2. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कितनी सरफेस कांटेक्ट में है, दिस वन एंड दिस वन. तो दिन दोनों सरफेसेस की वजह से क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो. तो अगर इस ब्लॉक का मास m1 में मान लो और इस ब्लॉक का मास m2, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n1 बिकॉज ऑफ दिस सरफेस. अब देखो, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस से आनी चाहिए रिएक्शन, तो नहीं. जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस, सिर्फ उसी से ही रिएक्शन डेवलप हो. m1 और m2 की ये वाली सरफेस इन कांटेक्ट है, तो सिर्फ यहीं से एक रिएक्शन डेवलप हो. आप कहो कि m1 पे रिएक्शन ग्राउंड भी तो लगाएगी, नहीं, ग्राउंड नहीं लगाएगी क्योंकि ग्राउंड के साथ इसका कांटेक्ट ही नहीं. ठीक है. सो इफ आई ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक m1, there will be a normal reaction perpendicular to the surface and specifically the weight of this block acting in the downward direction, which is m1 into g. This is the FBD of m1 block. Now try to draw the FBD of m2 block. m2 ब्लॉक का FBD कैसे बनाएंगे? अब देखो, ये सरफेस इन कांटेक्ट थी, तो जब ये इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था n1, तो इस पे भी एक डाउनवर्ड फोर्स जनरेट हो. ठीक है. तो वी कैन से इस ग्राउंड की वजह से जो इसके पास नॉर्मल रिएक्शन आई दैट इज n2, ड्यू टू द अपर ब्लॉक जो नॉर्मल रिएक्शन आई इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज n1, एंड देयर इज वन मोर फोर्स व्हिच इज m2 into g, द वेट ऑफ द सिस्टम. अगेन, ये जो n2 आया इट इज बिकॉज ऑफ द ग्राउंड लेवल कांटेक्ट, जो ग्राउंड के साथ इसका कांटेक्ट था. ये जो n1 आया इट इज बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट विद m1 ब्लॉक, जो इसके ऊपर रखा हुआ m1 ब्लॉक. ठीक है. अब अगर आप, क्योंकि सिस्टम पे कोई मूवमेंट तो नहीं है, सिस्टम इज इन रेस्ट, ये सिस्टम रेस्ट में, तो व्हाट वी कैन राइट, that n1 is equals to m1 into g, and for this block we can write n2, net force will be 0, n2 is equals to n1 plus m2 g. Clear? Now if you put the value of n1 here, it will become m1 into g, m2 into g. So similarly we can write n2 is equals to m1 plus m2 into g. What does it mean? That here the beautiful concept of system will come. We can assume this system as a whole comprises of only one block which has a mass of m1 plus m2. So it will generate a normal reaction n and a downward force of weight which is m1 plus m2 into g. So from here you can also see n is also coming out as m1 plus m2 into g. So we can comprise this system as this when, as and when the system is in rest and both the blocks are placed together. ठीक है, क्लियर हुआ? चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एफबीडी ड्रॉ करने के. अब एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देख लेते हैं. सपोज मेरे पास ये ब्लॉक है m1, इसके साथ अटैच एक दूसरा ब्लॉक है m2, और इसी के साथ अटैच एक तीसरा ब्लॉक भी है m3. अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे डेवलप होगी, मैंने इधर से एक फोर्स लगाया हुआ है F1 और इधर से एक फोर्स लगाया हुआ है F2. ठीक है. तो क्या कांटेक्ट फोर्सेस हैं? बिल्कुल है. एक तो कांटेक्ट यही बन गया सरफेसेस का, ये वाला, और एक कांटेक्ट ये बन रहा है ग्राउंड से. ठीक है. तो अगर m1 की एफबीडी की बात करूं,
ध्यान से समझना. If I talk about the FBD of M1, F1 is acting in this direction, so I can write it in this direction. Same है direction F1. ठीक है. F2 M1 पे तो नहीं लग रहा, तो we will not consider it. इसका अपना वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा M1 × G. ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, तो एक रिएक्शन आ रहा होगा ऊपर, एंड लेट सपोज दिस रिएक्शन इज N1. अब इसका कांटेक्ट M2 के साथ भी तो है ना, ये वाला भी तो कांटेक्ट बन गया, तो यहां से एक फोर्स जनरेट होगी N2. ठीक है. देखो, बहुत ही सिंपल तरीका है इस नॉर्मल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का. अगर दो ब्लॉक कांटेक्ट में है, ऑलवेज ड्रॉ द लाइन ऑफ कांटेक्ट. ये बना दो परपेंडिकुलर लाइन एट द कांटेक्ट. तो ये जो ऊपर का वाला हिस्सा है, ये तो ऊपर वाले की नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो डाउनवर्ड वाला हिस्सा है, ये डाउनवर्ड वाले पे नॉर्मल रिएक्शन. अगर मैं छोटे वाले ब्लॉक को लूं, तो अपवर्ड साइड में ये वाला रिएक्शन आया डाउनवर्ड वाले ब्लॉक से. और अगर मैं बड़े ब्लॉक को लूं, तो डाउन साइज में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन आया, इट इज बिकॉज ऑफ द अपर ब्लॉक. ठीक है. क्लियर है ये सब? किसी को कोई डाउट है भाई? एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. अनम्यूट योर सेल्फ एंड देन आस्क. हाँ. अब M2 ब्लॉक का अगर एफबीडी ड्रॉ करें, तो M2 ब्लॉक का कर सकते हो आप, अपनी नोटबुक में करो भाई सब. M2 ब्लॉक का एफबीडी डाउनवर्ड में M2G, weight force always perpendicularly downward. The normal reaction, we can say N1 dash, because of the ground contact. And देखो, ये मैंने दो ब्लॉक बनाए हुए, दो लाइन बनाई, तो ये वाला ब्लॉक इसे अंदर की तरफ पुश कर रहा है, और ये वाला ब्लॉक भी अंदर की तरफ पुश कर रहा है. तो दो नॉर्मल रिएक्शन बनेंगी. कौन सी? N2 डैश N2, और इधर से बनेगी N3. जस्ट टू शो, नॉट टू सॉल्व हियर, जस्ट टू शो. दिस इज M2. सिमिलरली जब आप M3 का एफबीडी बनाओगे, तो डाउन साइज में M3G नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स और द वेट फोर्स. अपवर्ड साइड में N1 डबल डैश. Here the force acting is F2, and due to this contact between M2 and M3, in the normal reaction will be acting in this direction, which is N3. ठीक है. अब यही फोर्स अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम. और उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिस्टम एक साथ होना चाहिए. ठीक है. इंटरनली कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए. तो ऐसा ही तो है यहाँ पे भी. वी कैन कंप्राइज दिस एज अ सिस्टम. दिस वन, this system has a mass of m1, m2, m3, and there is two force F2 and F1 is acting. ठीक है. क्लियर हुआ? And there is a downward reaction which we can say m1 plus m2 plus m3 into G, which is the weight of the system, and upward size में, upward direction में there is a normal reaction. The normal reaction is coming out as m1 plus m2 plus m3 into G. ठीक है. This is the beauty of system, considering this whole as a system. Got it? चलो. Now, अब inclined surfaces पे बात करेंगे. How to draw the FBD on inclined surfaces. Clear? अच्छा. Suppose मेरे पास एक inclined plane at an angle theta, and there is a block placed over it. The surfaces are smooth because we are now not discussing about the friction. We will be discussing it in the further lectures. But now you can consider the surfaces are frictionless. So we all know that this block try to move in this direction along the inclined plane. Now, if you see the FBD of this block, how to draw the FBD? The first factor that we want to draw is the weight force, which is acting downward, which is acting perpendicularly downward in the downward direction. This is mg, the weight of this block m.
Normal reaction, can anyone guess what will be the direction? Normal reaction will be acting, मैंने क्या बताया, normal reaction will always act perpendicular to the contact surface. तो कॉन्टेक्ट तो ये है इंक्लाइंड, तो इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन है. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट रिजोल्व द फोर्सेस इनटू टू स्पेसिफाइड डायरेक्शन. तो ये मोशन आपको देखना पड़ेगा किसके अलोंग हो रहा है. तो मोशन इज हैपनिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. तो मैं क्या करूंगा, इस इंक्लाइन को ही एक्स एक्सिस मान लूंगा और इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस. तो वट एवर द फोर्सेस विच इज नॉट लाइंग in the direction of y and in the direction of x, we just have to resolve those forces. ठीक है. अब देखो, तो mg ही एक ऐसा फोर्स है जो परपेंडिकुलरली नहीं आ रहा है, तो वी हैव टू रिजॉल्व इट. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज mg. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन mg and this perpendicular? If this angle is theta, we can say this angle is 90 minus theta because this angle is 90 degree. If this is 90 minus theta, so this will become theta because both are perpendicular. Now just resolve the mg force. This component will be mg cos theta and this component in this direction will be mg sin theta. ये समझ में आया ना सभी? भाई mg force है in this direction. I want to resolve into two perpendicular direction. तो ये component इसका आया mg cos theta और ये component इसका आया mg sin theta. ठीक है. चलो, अब यहाँ पर there is no force to stop it. ठीक है. तो if I see, the motion of this block is happening along the line perpendicular, sorry, along the inclined plane. So we can say in the perpendicular direction to the inclined plane, there is no motion happening. So we can say sigma Fy, which is the forces in the vertical y direction, is zero, net force. If it is zero, then we can say N should be equals to mg cos of theta. ठीक है. This is equation number 1. Now the second equation, how to find out? So we will apply Newton second law. Newton's second law says that F external equals to mass into acceleration. Now, what is the acceleration? Oh, sorry, what is the external force on the system? So if you will see, mg sin theta was the only remaining force. N has balanced out this mg cos theta. So in x direction, the only remaining force is mg sin theta. There is no other force to compensate it or to balance it. So this will behave as a F external force. We can place it here. Mg sin theta should be equals to m into a. So from here you can see the acceleration of the block will coming out as g sin theta. Okay, this is equation number 2. Now the second force is this is the normal reaction we have discussed. Second type of force is tension force. Tension force. Now tension force के लिए you need to remember one thing. The tension will be developed in a string or rock, and that string should be ideal. That we will discuss in this chapter. So ideal string के बारे में you should know. Ideal string or rock. तो ideal string और rock क्या होती है भाई? Which has no mass. Which has no mass. कोई मास उसके पास नहीं. And inextensible. मतलब you cannot extend it, you cannot stretch it. Inextensible. ठीक है. तो ऐसी स्ट्रिंग को हम क्या बोलेंगे? आइडियल स्ट्रिंग बोलेंगे. एंड इन दिस चैप्टर वी टोटली डिपेंड ऑन दिस आइडियल स्ट्रिंग. एक दो क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली हम करेंगे, in which we consider that there is a mass in the string
but for all the type of for most of the question, the string should be ideal and which has no mass and inextensible. So these two are very important parameter for a string. Okay. Now the third thing is pulley, and पुली में भी स्पेसिफिकली आइडियल पुली. अब देखो पुली क्या होता है क्या नहीं होता है, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट यू कैन लर्न पुली इज अ डिवाइस विच कैन convert one type of motion into another type of motion, or specifically the rotational motion of a block of the system to the translational motion. ठीक है ना. pulley, you have seen in the old days we use this device to lift up the water from the well. ठीक है, कुएं से पानी निकालने में काम आता था ये. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि इसके रोटेशन की वजह से, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, द सिस्टम इज ट्रांसलेटिंग इन द लीनियर डायरेक्शन. इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वो इनिशियली इधर से है, फाइनली 90 डिग्री का चेंज करती है. ठीक है. आइडियल पुली इज ऑल्सो massless एंड फ्रिक्शनलेस. जब रोप उसके ऊपर से जाएगी तो देर विल बी नो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द पुली. ठीक है. नो, always remember the very important note point here, that tension can or tension will only develop when the string is stressed. ठीक है. No tension in compression. No tension in compression. ठीक है. तो जब भी हम स्ट्रिंग को कंप्रेस करेंगे, देर विल बी नो टेंशन, टेंशन विल बिकम जीरो. व्हेन वी स्ट्रेस इट, तो टेंशन विल डेवलप इंस्टेंटनियसली, एकदम से, विदाउट एनी टाइम. अब इसी का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस इंस्टेंटनियसली. एकदम से डेवलप होती है टेंशन. ठीक है. तो सपोज वी हैव अ ब्लॉक हियर ऑफ मास m, and I'm pulling this with the help of a rope by applying force F. ठीक है. और specifically I'll take two blocks. These blocks are connected with each other because of the string, ideal string, and this block of m2 mass is pulled by a force F1. So if you draw the FBD of this block m2, so m2 पे एक force लगा F1 इस तरफ to the right, बट देर इज अ स्ट्रिंग अटैच टू इट. तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है. तो स्ट्रिंग विल बिहेव एज अ स्टिफ एंड इट विल नॉट गेटिंग स्ट्रेच. तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज हम स्ट्रिंग को खींचना चाह रहे हैं आगे की तरफ, तो ये हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी, टेंशन फोर्स, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. तो टेंशन फोर्स हमेशा इस तरह से डेवलप होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट. यही सेम फोर्स m1 पे कैसे लगेगा, इस तरफ, टू द राइट. ठीक है. क्लियर हुई बात. तो ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी ना हो. चलो इम्पल्स की भी बात कर लेता हूँ. इम्पल्स से पहले द अनदर रिमेनिंग फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, दैट वुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, विच मीन्स
x is nothing but the displacement of the block, displacement of block. ठीक है, तो ये मेरा स्प्रिंग है, ये ब्लॉक इसके साथ अटैच। तो जैसे ही मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं with the displacement of x, the force of the spring will be developed in the opposite direction, क्योंकि मैंने अभी स्प्रिंग को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो ये स्प्रिंग वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा ड्यू टू इलास्टिसिटी। तो दैट फोर्स ऑन दिस मास एम ब्लॉक में यहाँ पे दिखा देता हूँ, विल बी इन दिस डायरेक्शन एफ ऑफ स्प्रिंग के एक्स। गॉट इट? इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द spring will apply the force, apply force in both ways। both ways मतलब if you compress it तब भी ये फोर्स लगाएगा, कंप्रेशन में भी, एंड इफ यू ट्राई टू स्ट्रेच इट तब भी ये फोर्स लगाएगा, स्ट्रेचिंग। तो स्प्रिंग विल अपोज बोथ द सिचुएशन, एदर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। इसका एक नाम इलोंगेशन भी होता है, इलोंगेशन। यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई आई हैव रिटन दिस इंस्टेंटेनियस, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज नॉट इंस्टेंटेनियस फोर्स। द स्प्रिंग फोर्स is not an instantaneous force। मतलब ये फोर्स एकदम से डेवलप नहीं हो, तो तभी हम स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर पाते हैं, बिकॉज इट इज अलाउइंग अस टू डू सो। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियसली डेवलप नहीं होता है और इंस्टेंटेनियसली गायब भी नहीं होता है। ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप एंड देन इट विल एक्ट। Got it? Now what is impulse? So impulse is also the impact of force, impact of force is impulse। राइट कैसे करते हैं? एक दो नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से आपको मिल सकता है, एक दो क्वेश्चन। वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं, बट नीट वालों के लिए दैट इज अ गुड थिंग, दिस विल बी अ गुड कॉन्सेप्ट फॉर देम। नाउ impact of force is impulse which is given by J is nothing but change of momentum delta p, which is nothing but P final minus P initial। ठीक है, अब we know that F external on any system is nothing but delta P by delta T, rate of change of momentum। So delta P can be also written as F external into delta T, and delta P is nothing but J, so J is equals to delta P is equals to F external into time, which is delta T। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखो, तो F एक्सटर्नल एंड डेल्टा टी एक साथ प्रोडक्ट में, मतलब अगर डेल्टा टी मेरा बहुत कम है, इफ डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स विल improve वेरी लार्ज, F external would be very large। Got it? If delta t is very less, then F external would be very large, and these forces are termed as impulsive forces। So these forces are termed as impulsive forces, impulsive forces। उनका ग्राफ कैसा होता है भाई? ये मेरा फोर्स है, ये टाइम पीरियड है, तो दे विल डेवलप वेरी इंस्टेंटेनियसली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम।
This is delta t is very less. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे. Let me draw it with another pen. ठीक है भाई, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड एक बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए बहुत ज्यादा होता है. वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल ऑफ दीज फोर्सेस आर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और सरफेस फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शन फॉर सम टाइम, फ्रिक्शनल फोर्सेस. देखो, जब भी कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो एट दैट टाइम द बॉल एंड द बैट मेकिंग अ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा. एंड ड्यू टू दैट कॉन्टेक्ट, अब वो कॉन्टेक्ट होता कितने टाइम के लिए? बहुत छोटे टाइम के लिए, लेकिन जो फोर्स डिलीवर करते हैं एक दूसरे को, फोर्स जो एक्सचेंज हुआ, दैट इज वेरी लार्ज. तो जब भी कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है, तो दैट फोर्स विल बी कैटेगराइज एज द इम्पल्सिव फोर्सेस. क्लियर हुई बात? चलो, तो ये आपका इम्पल्स होता है. इम्पल्स का आप एक और चीज भी ध्यान में रख सकते हैं इम्पल्स को लेकर के. अगर आपको गिवन है एफ टी ग्राफ क्वेश्चंस में, जेई मेन या नीट में, अगर आपको एफ टी ग्राफ गिवन, तो इट्स बेसिकली आस्किंग यू टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसी भी तरह का अगर आपको ग्राफ गिवन है, तो एफ टी ग्राफ का एरिया अंडर दिस कर्व गिव यू चेंज इन मोमेंटम, विच इज नथिंग बट इम्पल्स. इम्पल्स. ठीक है, तो एरिया अंडर एफ टी कर्व gives you, gives us change of impulse, or we can say impulse. Got it? तो ये हमेशा याद रखना है आपको. नाउ we will try to solve this question, but before that I have launched the poll. Please do participate in that poll to mark your attendance, and then we will solve this question. ठीक है? So the question here is, the player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a speed of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player is. तो मास ऑफ द बॉल कितना गिवन है भाई? मास ऑफ द बॉल कितना गिवन है? 150 ग्राम. वी कैन से 0.15 किलोग्राम. टाइम पीरियड is also given as 0.1 second. Velocity of the ball is given as 20 meter per second. ठीक है, so what it been asking? Magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player. So we can say that force is nothing but delta p by delta t. ठीक है, delta p will nothing but mv p final minus p initial by delta t. अब देखो, फाइनल तो मोमेंटम क्या हो गया? जीरो, क्योंकि जब क्रिकेट प्लेयर ने कैच कर लिया ना बॉल, तो फाइनली तो बॉल का जो वेलोसिटी है वो जीरो ही होगा. तो फाइनल मोमेंटम विल बिकम जीरो. इनिशियल मोमेंटम इज मास ऑफ द बॉल मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी.
and divided by the time period, which is 0.1 second. It actually the impulse it is asking you. ठीक है ना? Now this will become minus 0.15 multiply by 20 into 10 to remove this radical sign, this decimal sign from the dumb side. ठीक है? This will become 200 minus 0.515 into 200. So this will gives you 30 Newton force. This is the force experienced by the cricket player on the hand of the cricket player. It will experiencing a force of 30 Newton. Now this is it for today's class. If anyone has any kind of doubt, you can ask right now. Otherwise, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsive. Bye bye. Take care of yourself. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. Any kind of doubt.